In the previous video, we have completed the hormones of the anterior lobe of the pituitary gland. And now in this video, we are going to learn the hormones of posterior lobe of pituitary gland. तो जैसे हमें पता है कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन्स नहीं बनाती, कोई हार्मोन सिंथेसाइज सीक्रेट नहीं करती है, तो क्या करती है? ओनली स्टोर्ड एंड रिलीज द टू हार्मोन्स। तो क्या करती है? फर्स्ट पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ओनली स्टोर्ड एंड रिलीज्ड द हार्मोन्स। कब रिलीज करती है? वेन एवर रिक्वायर्ड, जब जरूरत होती है तब स्टोर किया हुआ हार्मोन्स को थ्रू ब्लड रिलीज करती है एंड दैट हार्मोन रीचेस टू द टारगेट साइट। कौन से हार्मोन्स है? तो दो हार्मोन्स है। फर्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड वन इज वैसोप्रेसिन। तो दिस, तो अगर रिलीज करती, ओनली स्टोर करती है या रिलीज करती है, तो ये हार्मोन कौन बनाता है? तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखे हैं कि these two are the hormones which are produced by hypothalamus. So these two hormones कैसे है? These two hormones are hypothalamic hormones, मतलब hypothalamus बनाता है। So these two hormones are hypothalamic hormones, मतलब synthesized and secreted by the hypothalamus, oxytocin and vasopressin. So which is first? First is oxytocin. तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में? फर्स्ट, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, in female it stimulate the vigorous contraction of uterus at the time of birth। एंड हमें पता है यूटेरस क्या है कि जहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, जहां पर फीटस की 9 मंथ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। सो उसका वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन कब? एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसलिए ऑक्सीटोसिन इज आल्सो नोन एज द बर्थ हार्मोन। And third function it carry out the ejection of milk from the mammary gland। तो कौन से? नंबर वन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इट स्टिमुलेट और इट एक्ट्स ऑन, स्टिमुलेट की जगह लिखेंगे एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी एंड क्या करती है? एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। अगर स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म होता है। सो दैट इज फर्स्ट, इट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड क्या रहा? इन फीमेल्स क्या करती है? इन फीमेल स्टिमुलेट वाइगरस, बहुत फोर्स से ज्यादा वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। कब? एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ। किसका? इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट द वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। एंड हमें पता है यूटेरस इज द ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड उसे हम कहते हैं गेस्टेशन, गेस्टेशन पीरियड, जो हमारे फीमेल में होता है 9 मंथ 9 डेज टू 80 डेज। तो वहां पे एट द टाइम ऑफ जब जब बर्थ होता है तो यूटेरस का वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन कैरी आउट करने के लिए ये ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है एंड इट हेल्प्स फॉर द
delivery. So this hormone is also known as birth hormone. उस हार्मोन को दूसरा नाम क्या है? बर्थ हार्मोन. Why? Because it helps at the time of birth to carry out the vigorous contraction. इसलिए this hormone is also known as birth hormone. Third one is, third क्या है? Third, it helps in ejection of milk. Ejection of milk from mammary gland. From mammary gland. So these are the three important functions performed by the oxytocin in our body. Right? The another name for oxytocin is birth hormone. So ये three functions perform. Now second is vasopressin. अब vasopressin क्या करता है? तो vasopressin mainly acts on the latter part of the renal tubule of the kidney. मतलब वैसोप्रेसिन का टारगेट साइट है किडनी. किडनी का कौन सा पार्ट? रेनल ट्यूब्यूल. रेनल ट्यूब्यूल का कौन सा पार्ट? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. क्या करता है? स्टिमुलेट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. राइट, मतलब कि जब हमारे बॉडी से वाटर लॉस होता है थ्रू यूरिन तो उसे हम कहते हैं डायूरेसिस. सो उसको प्रिवेंट करने के लिए वैसोप्रेसिन. सो फर्स्ट. सेकंड वन इज vasopressin. That is the second one. क्या करता है? कहाँ एक्ट होता है? It acts on latter part of renal tubule. Renal tubule of kidney. Therefore, इसलिए मैंने कहा कि वैसोप्रेसिन का टारगेट साइट क्या है? किडनी पे एक्ट होता है. किडनी पे कौन से पार्ट? रेनल ट्यूब्यूल. एंड रेनल ट्यूब्यूल क्या है? तो रेनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. एंड हमें पता है कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. सो रेनल पार्ट ऑफ द किडनी क्या करता है? एंड स्टिमुलेट reabsorption of water and electrolytes. वहां से उस रेनल ट्यूब्यूल से वाटर रीअब्सॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब करता है. मतलब क्या करता है? मतलब प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स थ्रू यूरिन. सो इट क्या करता है? इट प्रिवेंट excessive loss of body fluids or water through urine. उसको क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं. अगर हमारे बॉडी से बॉडी फ्लूइड्स वाटर लॉस हो रहा है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है थ्रू यूरिन, तो उसको प्रिवेंट करते हैं. एंड हमें पता है excessive loss of body fluids or water through urine is known as diuresis. उसे क्या कहते हैं? We call it as diuresis. So in short, vasopressin prevent. क्या करता है? Vasopressin prevent diuresis. Diuresis मतलब excessive loss of body fluids through the urine. कैसे? It acts on the latter part of the renal tubule and वहां से water and electrolytes भी absorb करके blood में ऐड कर देता है. इसलिए it is able to prevent diuresis. Therefore, vasopressin is also called as ADH. मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन. मतलब एंटी अपोजिट एंटी डायूरेटिक हार्मोन. मतलब the hormone which is used to prevent the diuresis. Hence, the another name for vasopressin is ADH, that is anti-diuretic hormones, because
इट प्रिवेंट्स हेल्प करता है डायूरेसिस को रोकने में, prevent the excessive loss of water from the body fluids through urine. इसलिए the another name is ADH, antidiuretic hormones, right? So two hormones. First one is oxytocin, and second one is vasopressin. Oxytocin is termed as the birth hormone, and vasopressin is termed as antidiuretic hormone because it prevents the diuresis, right? तो ये होने के बाद अगर वन कंडीशन, कौन सी कंडीशन है इसको मैं मिटाता हूं, कौन सी कंडीशन है कि इफ देयर इज अ इम्पेयरमेंट, मतलब फॉल्ट कहां पर, अगर these two hormones oxytocin and vasopressin प्रोड्यूस होने में देयर इज अ डिफेक्ट है, कैनॉट प्रोड्यूस, तो क्या होगा, राइट? सो क्या होगा कि वाटर जो किडनी की एबिलिटी है टू कंजर्व द वाटर, वाटर कंजर्वेशन किडनी नहीं कर पाएंगे, लीडिंग टू वाटर लॉस, water loss through the body, and that condition is known as diabetes insipidus. So अगर ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो कौन सा कंडीशन बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस. सो क्या भी यहाँ इफ देयर इज impairment, अब ये जो वर्ड है that is word from the NCERT and I am using the word strictly sentence strictly from the NCERT. So if there is an impairment in the secretion and synthesis of these hormones, क्या होगा, किडनी का जो फंक्शन है दैट इज किडनी लूज और किडनी लॉस द एबिलिटी, kidney lost the ability of water conservation, वाटर कंजर्वेशन करने की उसकी जो एबिलिटी है, वाटर कंजर्वेशन करने की उसका जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा अगर ये जो हार्मोन्स नहीं बनेंगे या वैसोप्रेसिन नहीं बनेगा, राइट? तो क्या होगा वैसोप्रेसिन नहीं बनेगा तो पर्टिकुलर, तो किडनी लॉस द एबिलिटी ऑफ वाटर कंजर्वेशन लीडिंग टू क्या होगा और रिजल्ट इनटू लीडिंग टू वाटर लॉस, वाटर लॉस होगा, एंड ये जो कंडीशन है दैट कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस. उसे क्या कहेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस. तो डायबिटीज इंसिपिडस के लिए दिस हार्मोन impairment in the secretion and synthesis of the hormones, तो क्या होगा, किडनी लॉस द एबिलिटी ऑफ वाटर कंजर्वेशन, किडनी क्या करेगी, किडनी लॉस द एबिलिटी ऑफ वाटर कंजर्वेशन लीडिंग टू वाटर लॉस. दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस. these hormones मतलब so these are the hormones of the posterior lobe of the pituitary gland. In the next video, we'll discuss the pineal gland.